Namaskar. A warm welcome to all the lovely participants here on Zoom and YouTube. आप सभी का स्वागत है इस PMC गुजरात के स्वाध्याय सत्र में. Today is a divine evening. It is Christmas Eve. And to make it more better, Jasbir ji is going to do a swadhyay on St.Teresa of Avila. And she was a saint, a nun, a saint, a Carmelite, and she had put up many convents in Spain. So it is a beautiful book which she is going to do today. And swagat hai Jasbir ji aapka. Okay, we're looking forward to yet another lovely session from you. So welcome, Jasbir ji. Yes. Thank you, Sanjana ma'am. Thank you so much. Hi, everybody. Good evening on this Christmas Eve. And I was like, I don't know whether it is synchronicity or it's just by chance that what a day, what an eve to be doing Sister St. Teresa of Avila. And who else than me to be chosen for it, because I myself am from Carmel Convent School, so I'm a Carmelite, so I totally relate to her and her teachings. We have been hearing that all throughout our school time, in school. So I was so excited, just like a school kid, when I was told I have to do St. Teresa. So I just hope I'm able to do full justice to this beautiful, beautiful saint. And let's get started. And being a Christmas Eve, I think we should have some carol or something like that to start with. Do you all agree with me? Definitely. Yeah? Yes. Okay. So I'll just share my screen and we're going to play a beautiful carol. So I would request everybody, you can put your cameras on and we can clap being muted. तो म्यूट पर रहेंगे, अपने कैमरा चालू रखेंगे. So let us all enjoy this Christmas cheer. Absolutely. Right. Absolutely. So let us all be in this Christmas spirit. Yes, ma'am. Just a second. Just a minute. I messed it up. 1 minute. Okay. All right. Can you see my screen? Everybody? Yeah, absolutely. Joy to the world. Right. Joy to the world. The Lord has come. Everyone, please, with your cameras on, it's a request, and everyone's going to clap along and enjoy this beautiful, beautiful Christmas carol. All right. So that was great. That was lovely. And Sheetal ma'am, thank you. You were totally in the flow and in the spirit. Yeah. So yes. Beautiful. All right. So now we come back to this beautiful book, which we are going to do today, St. Teresa of Avila. Now, this beautiful book, which we are doing, it has inestimable, details and accounts of 50 lovely books written by Tom Butler Borden. And the one which we are going to do today is absolutely close to my heart. And because the day is apt, so I'm sure we are all going to enjoy my presentation today. And I hope I'm going to do justice to what I'm about to deliver to you. So may I continue now with the book, Sanjana ma'am? Yeah, sure, ma'am. Okay. So for that, I will be just telling you a little story about, So this is the book which we are doing. And, right. So the Interior Castle is the book which we are going to discuss today. But before we go ahead with the book, talking about St. Teresa is absolutely important because her life story has been full of so much of mystery and mystics. She was a mystic herself,
and her life has been full of very mysterious, circumstances, and her life has been gone, up and down like that. She's been a writer, a reformer of the Carmelite order. So she made her order of her own. I will be telling you details about that later. Okay, now she had a number of problems in her life. So one day she actually whenever she used to have these visions, she used to talk to Christ, and she asked him that, why do I have so many problems? Why do I have? So he said, like, actually people who are dear to me, they get more problems in life. Now, जैसे we are going to go ahead with this book, आप थोड़ा इसको relate करिए with all the learnings we have learned before this book, जो हमने भगवद गीता में पढ़ा, या जो हमने पतंजलि में पढ़ रहे हैं मॉर्निंग सेशंस में, आप कहीं कहीं पे ना ग्लिम्पसेस आपको मिलेंगे जो एक दूसरे के साथ बहुत ओवरलैप और बहुत ज्यादा ओवरलैप करेंगे, और एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट आएगा आपको. We always find those who walk closest to Christ were those who had to bear the greatest trials. तो जो डिवाइन के ज्यादा क्लोज है, उनकी लाइफ में ही कहते हैं ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं. Now, St. Teresa, इनका बर्थ 15th century में हुआ था, in 1515. ये requested martyrdom at age 5. This is very, very interesting. What does this mean? Requested martyrdom at age 5. जब ये छोटी थी, इनके ब्रदर थे रॉड्रिक्स. तो ये और रॉड्रिक्स जब छोटे थे, तो इनके मम्मी पापा जो थे, पेरेंट्स जो थे, they were very, very spiritual, especially the father. तो उनको बहुत सेंट्स की स्टोरीज वगैरह सुनाते थे. तो उनको लगता था कि जो सेंट्स होते हैं वो हेवन में जाते हैं, राइट? आई एम गोइंग वो हेवन में जाते हैं. तो इनको लगता था हेवन तो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, तो हमें हेवन जाना चाहिए. तो एक दिन उसने अपने ब्रदर को बोला कि तुम्हें हेवन जाना है? तो सर, ऑफ कोर्स जाना है, हेवन जाना है. ही सेड, तो एक काम करते हैं, देयर आर 2 ways ऑफ गोइंग टू हेवन. एक तो है, या तो आप मार्टर बन जाओ, क्राइस्ट के लिए अपनी लाइफ दे दो, या फिर आपको बहुत इंटेंस साधना या प्रेयर करनी पड़ेगी. तो वो कहते हैं इजी वे ये होगा, हम एक काम करते हैं, हम अरब कंट्रीज में जाते हैं, वहां पे हम क्राइस्ट के बारे में बात करेंगे और वो हमें पकड़ के मार देंगे, सो हम मार्टर्स बन जाएंगे. सो लाइक दैट वी विल गो टू हेवन. सी, अ चाइल्ड ऑफ 5 टॉकिंग लाइक दैट. तो ये दोनों चल के जा रहे होते हैं, बट रास्ते में उनका अंकल, उनको पता चल जाता है कि दे आर रनिंग अवे फ्रॉम होम लाइक दिस. तो वो उनको पकड़ के वापस लेकर आता है. सो दैट इज द रिक्वेस्ट फॉर मार्टरडम एट द एज ऑफ 5, राइट? तो उसके बाद में क्या होता है, आपको थोड़ी सी इनकी लाइफ, अर्ली लाइफ के बारे में बताती हूँ. जैसे आई वाज सेइंग दैट शी शोड, शुरू से रिलीजियस थे क्योंकि पेरेंट्स दोनों बहुत रिलीजियस थे. उनकी जो चाइल्डहुड गेम्स भी थी ना, वो भी कभी नन की एक्टिंग करते थे, कभी कुछ ऐसे उस टाइप की इनकी चाइल्डहुड गेम्स थी. तो वो स्टोरीज पढ़ते थे बहुत सेंट्स वगैरह के, रॉड्रिक्स के साथ. तो एक दिन वो मार्टर बनने के लिए भी घर से भाग गए, जैसे मैंने आपको बताया, और उनके अंकल ने उनका ही स्पॉइल देयर प्लान और उनको पकड़ के वापस ले आए थे वो. सो दिस इज व्हाट दे डिड एट द एज ऑफ 5. बट जैसे जैसे वो बड़े होने लगे, व्हाट हैपेंड, उनका ना इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा कम होने लगा इस प्रेयर्स की तरफ. पहले वो बहुत प्रेयर करते थे चाइल्डहुड में, बट आज शी बिकेम अ टीनेजर. थोड़ा सा एक बार उन्होंने देखा, उनकी जो मम्मी हैं, she used to see a lot of magazines and books on fashion and beauty and like that. तो उनको वो चीजें बहुत इंटरेस्ट, she was a very pretty girl, young girl. तो वो चीजें उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगी. She started seeing those books and magazines which were on beauty and dressing up. तो उनको बहुत अच्छा लगता था ladies who were dressed up so well. तो उनका इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा प्रेयर से हटने लगा. बट अनफॉर्चुनेटली उनकी मम्मी की डेथ हो गई when she was just 14. And that was the time, the tender years, when you really need guidance. तो वो थोड़े हेवायर जाने लगे, उनका ध्यान हट गया बिल्कुल प्रेयर से, और बिल्कुल वो बॉयज की तरफ, that teenage years, she wanted to dress up very well. तो एक उनकी कजन आई उनके पास रहने. तो जब कजन आई, तो the cousin was another one, वो she was little older than her.
तो वो उनको थोड़ा गलत तरफ उनको ले जाने लगी, तो उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो गया टुवर्ड्स लुकिंग नाइस एंड अट्रैक्टिंग मेन एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उनके फादर बहुत ज्यादा सीरियस थे, उनको लगा कि ये क्या हो रहा है, वेयर इज शी गोइंग। तो वो स्ट्रिक्ट थे, थोड़े से रिलीजियस ज्यादा थे। तो उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ के लेके गए, he took her to a monastery, what would you say, a convent. तो convent उन दिनों में was only to give education to girls to become good housewives, manners and how to speak, how to talk, how to sit, how to walk, ये सब सिखाते थे उनको, क्योंकि कोई और प्रोफेशन तो वो कर नहीं सकते थे, their profession was not allowed. So then all that she was allowed was to learn all these good ways of ladylike ways, जिसको बोलते हैं ना। तो या फिर उनके पास दो ही चॉइस होती थी once they grow up, either to become a good housewife and run a good house and bear children, or to become a nun. तो जब वो कॉन्वेंट में गए, वहां पे भी उनको ना कुछ मिलने लगे, जो उनको टीचिंग्स मिलती थी सिस्टर वगैरह से, तो थोड़ा थोड़ा उनका ध्यान वापस प्रेयर की तरफ आने लगा। शी स्टार्टेड कमिंग बैक ऑन ट्रैक अगेन, एंड बहुत लव एंड कंपैशन की बातें वो सीखे फ्रॉम द सिस्टर्स। एंड देन शी रियलाइज्ड कि मेरे जो फादर हैं वो तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं और यहाँ पे ज्यादा अच्छा है। तो शी थॉट कि इट विल बी बेटर इफ आई बिकम अ नन। ओके, तो शी थॉट ऑफ बिकमिंग अ नन, बट क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली शी बिकेम सिक। I'm just telling you her life story because it's very interesting, though it's not in this book, but it's very very interesting. तो वो वापस उनको घर भेज देते, उनको मलेरिया हो जाता है, some very dreadful disease हो जाती है उस टाइम के हिसाब से, there was no cure. तो वो घर आते हैं and the father takes care, and the doctor tells him कि she is like totally gone और ये इनकी तो डेथ हो जाएगी, ये अब ठीक नहीं होंगे। But somehow somewhere उनके अंदर जो प्रेयर करने की शक्ति वापस आ गई थी, she started praying a lot to the Lord, and prayers करते 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 miraculously she became well. So in fact ये miracle तो उनका starting से ही start हो गया, because जिस चीज के लिए उन्होंने बोला था कि curable नहीं है, ये मर जाएंगी, but because of her prayers and her trust to the divine and towards the Lord, वो बच जाती। तो वो बच जाती हैं, तो तब उनका और भी ज्यादा फेथ हो जाता है टुवर्ड्स क्राइस्ट, एंड शी सेज नाउ आई वांट टू बिकम अ नन। तो उनके फादर कहते हैं कि नहीं, पहले पूरी तरह ठीक तो हो जाओ, अभी तो यू आर स्टिल अनवेल, अभी आप कैसे जाएंगे, पहले पूरी तरह स्ट्रेंथ गेन हो जाए। शी सेज नो, आई हैव गॉट टू गो। तो वो वापस आ जाती हैं इन दी कॉन्वेंट। सो व्हेन शी कम्स टू द कॉन्वेंट बैक अगेन, she starts learning all the order and जो वहां पे वो लोग उनको सिखाते थे in the convent about Jesus, life of Jesus and everything like that, तो वो वहां पर रहने लग जाती है and she learns all the order of the church. but वहां पर उनको बहुत mystical experiences होना start हो जाते हैं। For example, उनको विजन्स दिखने लग जाते हैं। Now, please relate it to the way जब हम मेडिटेशन भी करते हैं, हमको भी कई बार ऐसे विजन्स दिखते हैं, तो उनको ना स्टार्टिंग से ही उनका कनेक्ट इतना डीप हो जाता है, और शी स्टार्ट सीइंग विजन्स। प्रेयर करते करते टू जीसस, उनकी लाइफ में बहुत विजन्स, उनकी लाइफ इज फुल ऑफ मिस्टिकल विजन्स। आई विल शो यू अ फ्यू which I can show here on this platform. For example, एक छोटा बच्चा उनको विजन दिखा, तो उन्होंने इनफैक्ट उससे पूछा कि who are you? So this little thing, this little Jesus replied, no. She asked him, ये जब भी उनके विजन में कोई आते थे ना, तो ये पूछती थी कि who are you? तो उन्होंने उनसे वापस पूछा कि who are you? So she said, I'm St. Teresa of Jesus. She used to call herself St. Teresa of Jesus. Okay? So उसने बोला, but who are you? So he said, I'm Jesus of St. Teresa. So beautiful. मतलब that connection was there right from the beginning. उनको ऐसे ऐसे connections आने लग जाते हैं
This is a picture which I will explain it to you later. What is this? All right. तो जैसे हमने पढ़ा है पतंजलि में कि जब हम बहुत मेडिटेशन इंटेंस साधना कर लेते हैं, विभूति पाठ में हमने सब पढ़ा है कि पीपल गेन सर्टन मिस्टिकल क्वालिटीज आ जाती हैं, दे कैन राइज अबव द ग्राउंड. हाँ, तो इनको भी विजन्स होते होते she could just rise up, like that. Not that was not important. वो rise up करना was not the main aim of her doing prayers, but it used to just happen. Now this rising up can be even compared to the consciousness rising up. Her consciousness used to rise up so much कि वो physically भी body से ऊपर उठ जाते थे. Now there, in fact, she made a friend with another saint, St. John है ये. He's called the St. John of the Cross. ये लोग आपस में मिलके करते थे प्रेयर वगैरह, तो they both started having these, उनको भी बहुत mystical visions आते थे, and they both used to rise up from the ground. तो ये दूसरी sister देखे यहाँ पे छुप के देख रही है, she gets surprised कि ये हो क्या रहा है, what are they doing? But she used to just float up like that whenever they used to see visions. These are the various visions. जहाँ जब उनकी mother की death हुई थी, she actually turned toward Mother Mary. तो वो मदर मेरी की ये पूजा करने लग गए, and she got connected with her. तो she always used to tell her कि मेरी मदर की डेथ हो गई है, so you are like my mother now. तो वो मेरी को अपनी मदर की जगह रखते थे. So she used to see those visions also. Here, this is Jesus. She used to just pray so much to Jesus for compassion, for uplifting of all the other souls also who were in pain. In fact, she even got visions of hell. वो क्यों हुए थे? वो इसलिए क्योंकि उनकी जो लाइफ थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई थी स्टार्टिंग में, वो थोड़े सा डिरेल हो गई थी उनकी वो लाइफ. तो उनको विजन्स में आते थे कि that if you go on the wrong path, you are going to land up in hell. तो ये विजन्स उनको अपने प्रेयर के टाइम पे विजन ऑफ हेल भी बहुत आते थे. These are all visions of hell, कि कैसे आप हेल में जाएंगे if you go on the wrong path. This is what it's in the Bible, So Catholics believe that if we do wrong, we go to hell. And only when we love Christ and we follow the path of Christianity, we go to heaven. All right. एक तो उनको vision इतना intense आया कि she was sleeping और एक angel आता है और उस angel के पास एक लंबा सा spear है. और स्पीयर का जो टिप है उसमें फायर है. इट इज नॉट विजिबल इन दिस विजुअल, बट जस्ट इमेजिन दिस फायर ऑन द टिप. और वो बार बार उनके हाथ पे प्रिक करता है विद दैट स्पीयर. तो व्हेन ही pricks her heart with that spear, when she comes out of that trance, of that vision of hers, she realizes her heart has expanded with so much of love for Jesus. So this angel ने उसको उसके हार्ट में इतना ज्यादा लव इन्फ्यूज कर दिया for Jesus. All right. Now this is a very, very talked statue उनका है. This is from the time of, उनके बड़े ecstatic moments होते थे. She used to actually बहुत ही deep चले जाते थे उनके visions के अंदर. तो ये जो उनको इस टाइप के ecstatic experiences होते थे, तो सारे उनके विजन्स में ऐसे आते थे. There's a very, very famous statue by Lorenzo Bernini. ये वहां स्पेन में है किसी चैपल में. This is another vision of hers जहाँ पे उनको मदर मैरी और जोसेफ वो भी आते हैं, जो उनको एक वेल पहनाते हैं और मदर मैरी उनके गले में एक नेकलेस भी पहनाती है. So basically she gets these, gifts from them because later on when I will be explaining the book, जो हमने करनी है आज actually, the interior castle, उसके अंदर eventually at the last stage of her prayers is marriage or union with God, union with Jesus, जिसको हमारे हिंदुइज्म में या बुद्धिज्म में हम समाधि की स्थिति बोलेंगे. तो इनकी प्रेयर की स्थिति में the last is union with the Lord. So which आप इसको थोड़ा सा, I don't know whether it's relatable, we can compare to even the kind of love and affection Meera had for Krishna. तो वो एक union, she like उनका सारा love and affection was for
Lord Jesus. In fact, जब वो nun बनने के लिए सबसे पहले आई थी, when she was little disturbed थे वो, तो उन्होंने एक nun से पूछा भी था कि you're so beautiful, don't you feel like talking to men or being with young men and boys? तो उस nun ने उनको बोला कि no, all my love is for Jesus. So this is how they बिल्कुल अपने आप को surrender कर देते हैं ये to Jesus, and they feel that all the love is actually for Jesus. For Jesus means for the world. So उनकी जो teachings होती हैं Christianity में, it's based on 3 things. I will be coming to that a little later. So compassion is the most topmost there. Here also, unka jo final vision tha, she gets that divine light, that light enters her, and it's like merging with the divine. So these were the kind of visions she had in her life. So this is her mystical marriage of Sister St. Teresa of Avila and Jesus on November 19, 1572. That's the time when she got that light, and she got that vision that she has become united with the Lord. All right. Now, this was a very, very controversial picture, which was released only after 23 years. Iske par movies bhi bani hui hain. So I will just go past this. I just thought I'll share it with you. So ye actually jab wo wahan pahunche na in that church to become a nun, to wahan pe she was learning the way of the Carmelite order. बट उन्होंने देखा कि वहां के जो जहां पे उनके जो सबसे पहले जहां गए थे, तो वहां उन्होंने देखा कि जो नन्स वगैरह हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे. वहां पे जो पैसे वाले लोग थे, पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, उन लोगों का बहुत आना जाना था, बहुत भीड़ रहती थी और वो बहुत गिफ्ट्स लाते थे. एंड तो उसको लगा कि सिर्फ जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, यहाँ के जो सिस्टर्स और मदर सुपीरियर है, जो सबसे सीनियर होते हैं उनको मदर सुपीरियर बोलते हैं, तो वो उनको बहुत इनवाइट करते थे वहां पे. तो उसको वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था. वो उसको लगता था कि यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए, अपनी प्रेयर करने के लिए तो मुझे पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है मेरे को यहाँ पे. सो आई एम नॉट हैप्पी हियर. सो शी गोज टू मदर सुपीरियर and she says that mother, I am not satisfied over here. मुझे यहाँ पे I'm not able to pray the way I want to. तो उसने कहा कि then what do you want? So she said, I'm going to go from here और मैं अपना order बनाऊंगी, मैं अपना एक Carmelite order बनाऊंगी. So in fact that mother superior got little angry also. कि what are you trying to say, that we are not following the rules of the Carmelite order? तो उसने कहा कि no, they are not strict enough and I am not satisfied here. तो उसने इनफैक्ट उसको थोड़ा सा ऐसे बोला कि आप अकेले बनाओगे जाके न्यू ऑर्डर. तो उसने बोला no, I have a group of other sisters also who are going to be with me and we are going to make our own Carmelite order. तो ये जो सेंट जॉन थे उनके फ्रेंड बनते हैं. फ्रेंड ऐसे बनते हैं कि इनकी भी अपनी ही स्टोरी है. Eventually they were so close कि उनको अपने विजन्स में सेंट टेरेसा के विजन्स भी आते थे. एंड देन इवेंचुअली डिटैचमेंट के लिए, व्हिच इज द अनदर ऑफ देयर एम ऑफ प्रेयर, he gets himself detached from her. So then he helps her, and with a group of nuns she goes and she makes this Carmelite order. Discalcid bolte hain, the Dilcacid Carmelite order. वो क्या है? That means basically in Spanish this word means barefoot, जो चप्पल नहीं पहनते. तो अगर आप ध्यान दीजिए, जितने भी कार्मल में मैं भी देखती थी अपने स्कूल में, जितनी भी नन्स थी सब सैंडल्स पहनती थी. वो कहते हैं कि हम barefoot इसलिए bare minimum में हमें रहना है. They were going to the original laws of the Carmel order. जिस कॉन्वेंट में वो थी वहां पर वो फॉलो नहीं हो रहा था. वो लग्जरीज और मनी की तरफ काफी इंक्लाइन थे. बट एक्चुअल में जीसस का अगर प्यार, जीसस हिमसेल्फ बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली. उनका बर्थ आपको पता है कहाँ हुआ था. इट वाज इन अ लिटिल हट, एंड शेपर्ड थे उसके फादर. तो शी सेड कि एक्चुअली मैं, इफ यू वांट टू बी यूनाइटेड विद गॉड, तो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, राइट? तो कोई भी हमें पॉवर्टी में रहना. तो बेयर मिनिमम में वो रहते थे, जितना बस थोड़ा सा खाना चाहिए उतना. एंड they used to the barefoot was actually the sign for
living in basic minimum requirements. All right. तो उन्होंने अपना order बनाया, and then she went ahead to make about 15 churches, 17 churches to be exact. उन्होंने बनाई, और उनके जो symbol थे was always a book, because she was a writer. She used to write a lot, and a heart and a spear. These were her symbols. Okay. Doctor of the church का मतलब she was an avid writer, and बहुत ज़्यादा उन्होंने books लिखी हैं, poetry लिखी है, poem लिखी है, बहुत in the love and grace of God. Okay. Now this is towards her last, उनके end के time. तो जैसे मैं पहले starting में आपको बता रही थी, वो बीमार हुए फिर, तो वो God से उन्होंने पूछा, हमें क्यों इतना sadness, मुझे क्यों इतना problems आई life में? Huh? I was so close to you. I've always just loved you. So he says, that is how I always treat my friends, said God. तो उसने मजाक में, वो तो conversation करती थी ना God के साथ. She used to talk with him. बात कर सकते थे वो. She says, that must be why you have so few friends, replies Teresa. So this is their conversation. So this is a deathbed. हमने भगवद गीता में पढ़ा है, which is the best way of dying. Yesterday also evening session जब था Wednesday को, on rights of death जो था, उसके अंदर ये टॉपिक आया था कि which is the best way to die. तो एक श्लोक है भगवद गीता में, I don't remember the number. It says the best way is भगवान को जो याद करते हुए जाते हैं. Now here भगवान को याद करना does not mean कि बस आपने कुछ लगा दिया और हो गया. नहीं, you have to be in that meditative state. तो जो meditative state में जो जिनकी death होती है, तो they unite with the divine directly. तो ये हमारी भगवद गीता में भी है, and this was her doctrine also. वो अपने death bed में वो सिर्फ cross को पकड़ के वो बहुत calm state में उन्होंने अपनी body vacate की. She remained in this position in prayer, full of deep peace and great repose. Thus, immersed in prayer, happy and smiling, she went out of this world into eternal life. So she says कि जैसे जिस state में आप अपनी body vacate करते हैं, it's understood that आप उसी state में आगे proceed करते हैं. तो this was her last, जो भी nuns वहां थी, उन्होंने बाद में बताया कि उनकी ऐसे डेथ हुई थी. वो इतनी काम थे और उनका फेस पे इतनी लाइट थी. She was herself looking like a celestial body. Okay. All right. So this is again that same जो मैं आपको बता रही थी, sculpture by Gian Lorenzo Bernini, Ecstasy of St. Teresa, Camaro Chapel, Rome. Okay. So these are their statues. This is St. John. And these are the churches which she made. She made 17 churches all over the world. Lots of schools, Carmelite schools hain all over the world. Colleges hain. So these are just glimpses of a few of our churches. Okay. So Christ has no body now on earth but yours, no hands, no feet but yours. You are the eyes with which Christ looks out his compassion to the world. Yours are the feet with which he is to go about doing things. Yours are the hands with which he is to bless us now. Such a beautiful, beautiful quotation. Now, these are actually three things, which they talk about. All her prayers were based on three major things. One was that, isko aap relate kariye with our Gita. एक तो है कि हमें attachment तो रखना ही नहीं है. हमारी ये जो body है, it's just a vehicle that we have come here with, right? Divine हमारे थ्रू कुछ काम करवाते हैं. हम जो भी करते हैं, we are just doing the will of the divine. We are just the mediums. So this is what is very evident in this quote. She says that compassion, love, these are the only ways by which हम यहाँ पे दुनिया में God का काम complete कर सकते हैं. तो जो हमारी physical body है, that is हिंदी में बोलते हैं ना, माया है. It's not the real thing. जो real thing है, that is invisible. So God here is invisible. वो दिखाई नहीं दे रहे, हमारी physical body दिखती है. But जो invisible को समझ जाए, that should be our aim. We should not get stuck with the physical aspect of life. So
we've already been reading all this in various of our Eastern books. So the same thing, world that जो dream जैसी world लगती है, वही actually real thing है, जो हम अपने meditation में, जो हमारी astral travel होती है, या हमारा connect with higher consciousness में हम जाते हैं, वो actual में real thing है. ये जो physical चीज है, ये तो the world जो हम जो देखते हैं, वो actual में dream है. Okay, so this is one of our very important. Another one, that these are three things they're going to talk about. One is the physical body and what is visible and invisible. The happy result of detachment. They also talk about detachment. This is absolutely what we've done in Bhagavad Gita. Is inner freedom, freedom from worry about body, comfort, honor, and wealth. तो वो कहते हैं हमें उसको पकड़ना है जो इटर्नल है. तो इटर्नल क्या है, वो दिखाई नहीं देता है. ये बॉडी, कंफर्ट, एसी लगाना, ये सब जो है, इससे हमें डिटैच होके रहना है. ठीक है, वी आर लिविंग हियर, तो हम अपने आप को कंफर्टेबल रखते हैं, बट एक्चुअल थिंग इज टू, जो इटर्नल चीज है उसके साथ हमें रहना है डिटैच होकर. ओके, एंड द लास्ट थिंग देन शी टॉक्स अबाउट इज ह्यूमिलिटी. There is more value in a little study of humility and in a single act of it than in all the knowledge in the world. तो पूरी दुनिया में कितना भी हम पढ़ लिख जाएं, हम कितना भी करें, अगर हमारे अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है, we are nowhere. तो अगर ह्यूमिलिटी है तो डिटैचमेंट तो ऑटोमेटिकली ही होगी. ओके, हमारे अंदर डिटैचमेंट तो एंड कंपैशन तो नेचुरली आ जाएगा अगर हमारे अंदर ह्यूमिलिटी है. These were her three things. Humility must always be doing its work like a bee, making honey in the hive. Without humility, all will be lost. So at the end of the day, उनकी जो prayer थी, जो उनकी teachings हैं, these are all teachings of Sister Teresa, Saint Teresa. उनकी teachings हैं ये humility, basically. Okay, now let me come to the, actually I got so carried away with the story. I hope you all enjoyed story of Saint Teresa. Can Sanjana ma'am? Absolutely, absolutely. We enjoyed. Yeah, I think it was really, really required because अब हम जो actual book के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, हम उनका character जानते हुए हमें बहुत easily वो समझ में आ जाएगा. Yes, so these are the various literature books which he has written. These are Spanish names. Camino de Perfección, which means way of the perfection. This book she wrote in 1566, जिसके अंदर ये basically इसने अपनी nuns के लिए लिखी थी when she started her own Carmelite order after 2 years staying in the other church, तो other convent. So she wrote this book जिसके अंदर उसने actual जो teachings है of the Carmelite order वो लिखी थी, for like it was like a rule book for the nuns in her convent. Then her main book, which is very talked about, जो हमने अभी discuss भी करनी है और मैंने बीच में touch भी करी है, is Interior Castles, the Mansions. This was written in 1580, Castillo Interior Las Moradas. This means Interior Castle, the Mansions. Now here she actually हमारी soul को वो एक diamond के castle के साथ compare करती हैं, जिसके छोटे छोटे compartments हैं. And the Lord is right in the middle, जिसको हम heart chakra, heart center, वो area भी कह सकते हैं. What she meant was the Lord, जिसको मैं पूरी दुनिया में ढूंढ रही हूँ, the Lord I'm looking for, throughout the world, is actually sitting right inside us. So I will just explain this interior castle after I've done with these other things. Several volumes of poetry. Most famous was God Alone is Enough. ये मैंने ये prayer भेजी. This is the most famous prayer of Saint Teresa, known all over the world. ये मैंने group में भेजी थी morning में. And if we have time towards the end of the session, I would like to play it also. So God alone is enough. Let nothing upset you. तो जब हमें पता है divine हमारे साथ है, हमें कुछ upset होने की जरूरत ही नहीं है. Let nothing startle you. आपको कोई भी चीज disturb नहीं करनी चाहिए. All things pass. God does not change. तो eternal क्या है? Eternal हमारी divine powers हैं. The God or our higher consciousness is eternal. And all things pass. The body pass हो जाएगी. Body की death हो जाएगी. ये तो हम burn कर देंगे. It will turn to ashes.
but the internal divine है, that will never change. Patience wins all. It seeks whoever has God lacks nothing. God alone is enough. Amen. तो God जो है, या आप कह लीजिए love और the divine जो है, that is more than enough. इसके अलावा हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है. All right, now I come to this lovely book, The Interior Castle by St.Teresa of Avila. Las Moradas, that means the mansions. Now here आप देखिए ये जो castle है, you know what's a castle? It's like a palace. ये उसने imagine किया एक vision में, like a diamond का एक castle बना हुआ है. उसको उसने compare किया हमारी soul से, हमारे internal within की journey. So this is journey within actually, going inside the spiral, this castle. And this castle has 7 levels. अब आप सब you know all हम इसको हम relate करेंगे with our Patanjali, with our Bhagavad Gita, with the knowledge of the chakras we have. वो सारी knowledge आप देखना कितनी easily fit in होगी in this interior castle. Now there are 7 levels. We know the 7 chakras, right? So we know the 7 ages of the soul. So इतने कहते हैं ना, automatically everything is going to fit into each other. तो she says the soul को divine तक पहुंचने के लिए, higher consciousness तक पहुंचने के लिए ये 7 levels के through जाना पड़ता है. अगर हम कहें root चक्रा से लेके हमें अपने crown चक्रा तक जाना है. तो ये 7 levels हैं और बिल्कुल सेंटर में जाके the highest level, ये 1 यहाँ है, 1 बाहर है, वहां से आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे अंदर है mystical union with God और our higher consciousness, और जब हम totally enlightened हो जाएंगे. So interior castle, I began to think of the soul as if it were a castle made of a single diamond or a very clear crystal in which there are many rooms, just as in heaven there are many mansions. अब ये mansions है क्या? Now for this I would like to just show you the PDF also. The interior castle of the human soul, as Teresa of Avila called it, has many rooms and they are slowly occupied by God, allowing us time and room to grow. मैंने आपको बोला जैसे, एक बार और इसको भी read कर देती हूँ मैं. In this book, she presents a model of the human soul as a castle cut from a single diamond. This castle is divided into 7 group of mansions, beginning at the outer gate, root chakra, okay? Outer gate, and moving inwards towards the center, moving towards our crown chakra. We enter the castle whenever we pray. For the gates to the outermost mansion is prayer. अब यहाँ पे उसने prayer को भी ना 4 टाइप में डिवाइड किया. एक prayer होती है vocal, जिसमें बोलना पड़ता है. तो ये जो बाहर वाला गेट में, बाहर वाला सर्कल में जो prayer है, ये हम जो बोल के वो prayer कर रहे हैं, जो हमें effort लगा के prayer करना पड़ रहा है. ठीक है, इसको वो आगे मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगी, वो कंपेयर करती है इस प्रेयर को विद इवन टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम अ वेल. अगर विलेज में आप लोग में देखा होगा, एक बहुत पहले जब वो सब भी नहीं होता था, वो व्हील भी नहीं होता था, तो रस्सी से बाल्टी बीच में डाल के वी यूज्ड टू पुल वाटर आउट, राइट, जो विलेज में रहते हैं. तो उसमें बहुत जोर लगता है, पानी को खींच के निकालना पड़ता है, तो एफर्ट लगाना पड़ता है. तो हम जब मेडिटेशन भी करते हैं, जब स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन, सम ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, हमें थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंसेस हुई थी. आई रिमेम्बर आई कुड नॉट सिट फॉर दैट लॉन्ग एट ऑल. तो बहुत एफर्ट लगाना, एफर्ट मीन्स नॉट फिजिकल एफर्ट, बट यस इट वाज अ थोड़ा सा शेकी टाइम था हमें. और उसी टाइम पे पत्नी सर कहते हैं 90% पीपल छोड़ देते हैं मेडिटेशन, कि हमारे बस की नहीं है, बिकॉज थोड़ी बॉडी पेन्स भी आती हैं, कुछ डिस्टर्बेंसेस भी होती हैं, थोड़ी तकलीफ भी होती है बॉडी में. तो हमारे तो वो जो टीथिंग ट्रबल जिसको बोलते हैं ना, स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको देख के नॉर्मली लोग डर जाते हैं एंड छोड़ देते हैं. बट वो अगर आपने एफर्ट कर लिया, सो दैट इज द वोकल प्रेयर, जो सबसे बाहर है. We enter the castle whenever we pray. For the gate of the outermost mansion is prayer. Those who never pray remain in a courtyard outside the gate with the toads and all that is foul. Toads होते हैं जैसे frog होते हैं ना, उस टाइप के, मतलब वहां पे अजीब अजीब जानवर हैं, वो lower most consciousness है ना,
तो people in the state are stuck in sin. तो जो अगर हम infant soul से थोड़ा बहुत मैच कर सकते हैं, जो बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है चीजों के, तो वो बस खाते हैं पीते हैं अपना एंजॉय करते हैं, और वो उनको सिन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी करते हैं, सो वो बाहर ही रह जाते हैं, वो गॉड तक, डिवाइन तक नहीं पहुंच पाते हैं. The first three mansions are considered to be ordinary prayer or active prayer. तो जो फर्स्ट थ्री मैंशंस हैं, जैसे हमारे फर्स्ट थ्री चक्रास होते हैं, रूट चक्रा, देन सेक्रल चक्रा एंड देन मणिपुर चक्रा, ये अर्थ में रहने के लिए रिक्वायर्ड है, हमें वर्ल्ड में रहने के लिए रिक्वायर्ड है. फिर जब हमारा हार्ट चक्र आता है, दैट इज द बीच का टाइम आता है, उससे हम फिर ट्रांसेंड कर जाते हैं, देन वी गो टुवर्ड्स द हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस. सो द फर्स्ट थ्री मैंशंस, they are not exactly the same, but I'm just trying to relate, with my knowledge. मैं relate करने की कोशिश कर रही हूँ, so that हमें थोड़ा याद करने में और समझने में it will be easy. And many things are matching also. So mansion 4 to 7 are considered to be contemplative, prayer, mystical or passive. तो पहले तो हमने आवाज, जैसे मैंने बोला, एफर्ट करके प्रेयर किया, खींचा पानी. सेकेंड लेवल में आते आते थोड़ा ईज आउट हो जाता है, हम बैठना सीख जाते हैं, एटलीस्ट हम सीधे बैठ जाते हैं, 1 घंटे तक बैठ पाते हैं, बीच बीच में कुछ टाइम पे हमारा ध्यान लगता भी है. तो उसमें क्या कंपेयर करेंगे हम, जैसे वेल में से पानी, वो व्हील होता है ना जिसमें छोटी छोटी बकेट्स लगी होती हैं, तो पुली के साथ जो चलता है, पुली से हमने नीचे पे वो जाता है, और वो पुली सिस्टम से वो व्हील चलता है, एंड द वाटर कम्स आउट. इट इज लिटिल इजियर देन द फर्स्ट स्टेज. ओके, तो ये भी वोकल प्रेयर में ही जाएगा, बट लिटिल कामर देन द फर्स्ट. एंड द नेक्स्ट टू, द थर्ड वाले को कंपेयर किया जाएगा प्रेयर को, द टाइप ऑफ प्रेयर टू से लाइक देन द गॉड टेक्स ओवर. ये जैसे अगर हमने किसी इरिगेशन करना है किसी गार्डन में, हम चैनल्स बना के पानी डालें, छोटे छोटे कैनाल्स बना के पानी डालें, तो थोड़ा इजियर हो जाएगा. और तो दिस इज एज इफ गॉड इज नॉट टेकिंग ओवर एज वी आर गोइंग अप टू आवर higher levels of consciousness. And then the last is rain. Rain is when the divine is pouring its divinity over you. तो वो mystical, तब कोई आवाज नहीं है, कुछ नहीं है, अपने आप हो रहा है. The rain is falling over you and you're getting washed with the divine powers and the energies from the universe. So that is the most highest form of prayer, mystical, passive. Passive means कोई आवाज नहीं है उसमें. So 7 stages of spiritual progression in Teresa of Avila's interior castle: state of grace and humility, practice of prayer, discipline and penance. हमने सीखा ना यो पतंजलि में भी different stages. तो हमें यम नियम, discipline, है ना, वो सब follow करना है. Supernatural elements of the mystical life, ये जब हमें visions होने लगते हैं, when we get into the theta stage, pure divine grace begins. Temporary union through prayer, infused contemplation. जब हमें विजन्स आते हैं या हमें ऐसे लगता है कि we got, हमें अपने spirit guides नजर आते हैं. Extended intimacy with the divine. Now here we come to Sister St. Teresa, जो उनको ये 6 and 7 को they have compared it with engagement and marriage. So extended intimacy with the divine, increasing afflictions, interior or exterior. तो उनको बहुत raptures होते हैं, different visions, and as I showed you earlier also, spiritual marriage. तो ये union जो हमारे बुद्धिज्म में या हिंदुइज्म में हम समाधि की स्थिति बोलेंगे, तो यहाँ पे they are calling it spiritual marriage. The soul and the God becomes completely united. So these are the levels of this mansion. Ways of prayer जो मैं आपको बता रही थी, ये सबसे ज्यादा मुश्किल है जब आप खींच के पानी निकाल रहे हैं वेल में से. एंड देन जब स्ट्रीम से पानी आता है, इट स्टार्ट्स बिकमिंग, ये 4 स्टेजेस है. दिस इज वेल में से ऐसे करके निकालना, फिर व्हील से निकालना ऐसे, एंड देन स्ट्रीम से पानी आ रहा है, एंड देन लास्टली द रेन, द रेन इज फॉलिंग ओवर अस. ओके, सो दिस इज हाउ शी डिस्क्राइब्स prayer, 4 stages of prayer. I hope I'm clear here. Any questions till now? Any questions till now? I can stop here for a moment. I have more to share, but I can pause for a while. Yeah, Nirmal ji has raised her hand. So Nirmal ji.
You can unmute Hello. yourself. You've given the option. Yeah. Hello. Yes, ma'am. Namaskar to everybody. Yes, ma'am. Namaskar. Good evening. This busy topic is very, very alluring, very nice. I have heard of Kamal, but what is Kamal light? Will you throw some light? I joined little late. Okay, so, okay. Ma'am, these are different orders. Catholic, जैसे Christianity में अगर आप पढ़ेंगे, these are different orders. Catholics होते हैं. Then Augustine order था पहले, जो Saint John थे, उन्होंने Augustine order था पहले. फिर Carmelite order was ये sisters के ना different Pope से ये लोग को permission मिलती है to open their own orders. तो उनके rules regulations होते हैं. You know, Christianity maybe there are two kinds of Christians. One जो Mary की prayer करते हैं. है ना, they are Catholics. Then there are the Protestants जो Mary को नहीं मानते हैं as mother of Jesus. वो एक different group है मैम. So let's not get into that. This is actually the history of Christianity. Yeah. So Carmelite means उन्होंने जैसे जो पहले वो गए थे वो भी Carmelite order ही था, but वो proper उसके rules follow नहीं कर रहे थे. They were very little easy on the rules जो होने चाहिए. Actually वो कहते हैं God को पाने के लिए Jesus also came and उन्होंने birth कहाँ लिया था? In such a poor condition. Yeah. तो कहते हैं जब तक आप poverty और pain नहीं आप feel करोगे, you cannot feel for others. This Christianity में they say you've got to be compassionate. मतलब सिंपल लिविंग में रहना है. तो आप नन्स देखिए, एक सिंपल सा उनका हैबिट होता है, वो ड्रेस होती है, सैंडल पहनते हैं, वेरी सिंपल दे लिव. इनफैक्ट जो बहुत पहले था कल्चर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे इवन हैड टू शेव देयर हेयर. वो इसलिए करते थे सो दैट उनका बिल्कुल भी ध्यान अपनी ब्यूटी की तरफ ना जाए. तो सिंपलिसिटी में रहते थे, बहुत सिंपल. बट जहां पर वो गई थी वहां पे दे वर नॉट बीइंग सिंपल. वो लोग गिफ्ट्स भी ले लेते थे जो रिच लोग आते थे. दे वांटेड इट वाज मोर ऑन मनी, सो पीपल हु हैड मोर मनी एंड पावर कुड विजिट दैट कॉन्वेंट, यू नो, वेरी इजीली एनी टाइम. इनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. आई रिमेंबर इन माय स्कूल, द चर्च वाज देयर इन द स्कूल, वी वर नॉट अलाउड टू गो देयर. तो इनके प्रेयर्स के टाइम बहुत चर्च. हाँ, You were not allowed to go to the church? In the school जहाँ पे ये रहते थे, in the convent, I mean, not in the church, sorry, the convent में जो उनका residential area था. हाँ, ये तो अभी है. हाँ, अभी है. तो उनके रेजिडेंट जो कॉन्वेंट होता है उसमें नहीं जाने देते थे हमको. हमें सिर्फ चर्च में लेके जाते थे लाइन बना के. That's it. हाँ, this rule is prevalent even now in the convent. Their rules are very very strict. वो उनके प्रेयर का टाइम बहुत ज्यादा होता है. दे हैव टू बी इन डीप प्रेयर. बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना होता टुवर्ड्स एनी वर्ल्डली प्लेजर्स. ठीक है. बट लेकिन जहां वो पहले गए थे वहां पे ऐसा नहीं हो रहा था, तो उनको वहां पे अच्छा नहीं लग रहा था. वो कह रहे थे कि हम लोग नहीं फॉलो कर रहे प्रॉपर रूल्स, इसलिए मैं अपना एक अलग ऑर्डर बनाऊंगी. मैं अपना ग्रुप लेके मैं चर्च बनाऊंगी. मैं उसको आई विल टेक केयर ऑफ द ऑर्डर देयर. So Nirmalji, you got your answer, I guess. So we can continue now. Yeah. Enough. Thank you. We are deviating from the topic. Yeah. So any question on her life or the mansion? And now let's concentrate on the mansion for the rest of the time. Now we have, it's almost 7. So shall I go ahead with the mansion now? Yeah, you can continue. Okay. So is my ye nahi. Just a minute, please. Is this visible? No, nothing is visible. Okay, just hold on then. Hold on, please. Yeah. Yes. Now it's being shared. Yes. We can. This is the slide which is visible. I want to actually show the PDF. Yeah. Is this visible now? Yeah. The PDF is visible. Okay. Just hold on. The PDF is visible? Yeah. All right. You can enlarge it a bit. Yeah, just a minute, ma'am. I'm trying. Kahan chala gaya? Okay. Just a moment, ma'am.
Just a moment, just a moment. Yeah, take your time, don't worry. Yeah, is it visible now? Yeah, perfect. All right. So ये अभी हमने जो अच्छी अच्छी चीजें हैं in this chapter, I've just highlighted them. Same questions जैसे जो भी spirituality में आते हैं. Would it not be a sign of great ignorance, my daughters, if a person who asked who he was and could not say and had no idea of who his father or his mother was or from which country he came? तो सिमिलरली हम अपने अपने एग्जिस्टेंस के लिए भी हम अगर सोचें कि हम कहाँ से आए हैं, हमारी सोल कहाँ से आई है, so these are the questions which start coming up, हम आए कहाँ से and why are we here? As I see it, we shall never succeed in knowing ourselves unless we seek to know God. So basically we are inner spiritual progress can motivate great earthly achievements. तो अपने प्रोग्रेस से, अपने स्पिरिचुअल नॉलेज से वो उनको बहुत सारे आंसर्स खुद ब खुद आते थे. आई थिंक मैं उनकी स्टोरी के बारे में काफी कुछ बता चुकी हूँ. As I told you, her adulthood, her choice was limited to marriage or becoming a nun. Okay. हाँ, उनको लगा जब वो काम जो पहले वाले कॉन्वेंट में छोड़ के आए उनके फादर, उनको लगा ये तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे अपना अपना रूम भी मिलता है, विजिटर्स भी आते हैं, so it is better to stay here because her father was very very strict. Okay. तो इसलिए उनको वहां कॉन्वेंट की लाइफ अच्छी लगी, though she had no special closeness to God yet. पहले उनको नहीं थी कुछ भी. हाँ, she began to have raptures and visions. We have discussed. I'm going to go ahead with this. I want to concentrate on the castle now. अच्छा, हाँ, जब उनको बहुत विजन्स आते थे तो लोगों को ये भी लगा कि ये सैटर्न के साथ कनेक्ट हो रही है, मतलब हेयरसी के साथ कनेक्ट किया. उन्होंने कहा ये इसको कोई जैसे कहते हैं ना भूत चढ़ गया, इसको ये क्या बोलती रहती है, ऐसा थोड़ी ना होता है. So many believed that these conversations were not with the Lord but with Satan. Satan is the devil. Their probing luckily led to a consensus that her experience were a genuine gift from God. तो उनके ऊपर जो religious men थे उन्होंने पूरा diagnose किया और फिर उन्होंने कहा नहीं, इसको सच में divine visions आते हैं. तो इन्होंने ये जो अपना बनाया जब strict observance के साथ 17 new convents and 2 monasteries. So this is her best masterpiece, interior castle, जिसकी हम बात कर रहे हैं. A description of the stages of her soul's growth. The book was originally intended for the eye of the Carmelite sisters only. Teresa's inspiration was her imagining of the soul as if it were a castle made from a single diamond or of a very clear crystal in which there are many rooms, just as in heaven there are many mansions. Now this is the first one जो मैं बता रही थी, जो बाहर है, सबसे बाहर venomous creatures, मतलब जो जहरीले एनिमल्स हैं वहां पे. Though God desires the best for the soul, its ability to recognize and love God is not great, and therefore self-knowledge also will be limited. यहाँ पे जो souls हैं, उनकी self-knowledge बहुत limited है, क्योंकि वो God का love अभी नहीं feel कर पा रहे हैं. Teresa speaks of those who are continually busying themselves with their affairs, never realizing the treasure that lies within. तो God तो हमारे center में है, heart में ही है ना? तो वो बाहर ही इधर उधर ढूंढ रहे हैं, उनको कोई पता नहीं कि ये ट्रेजर जो हम which we are seeking outside is actually inside us. Isn't it sounding very familiar? तो हमें इस अंदर के door of the castle through prayer and meditation ही अंदर जाना है. They cannot concentrate on much besides their preoccupations and attachments. जो रूट चक्र में ही रह जाती है जिनकी एनर्जी, वो सिर्फ अपने अटैचमेंट्स और वो अपने ये अंदर की डिवाइन को नहीं फील कर पाते, वो कॉन्शियसनेस को. Most people would foot in this picture. Yet Teresa says that even if it does not do much for you, just the attempt to get in on the first floor of the castle is a great step. तो जिनको realization, जैसे हम लोग हैं अभी, हमें realization हो रही है कि we have to go beyond this. We have to go beyond the worldly pleasures. ये बहुत हो गया, अब कितना, तो अब हमें थोड़ा सा uneasiness होने लगती है when people just get together for partying and all that. ठीक है, हो गया enjoyment. Now what? Now next, तो जो first stage से second mansion में पहुंचते हैं, now appreciate the need for regular prayer to starve off our old ways and so feel a comforting nearness to God. तो थोड़ा अब हम इसको थोड़ा सा ना मेडिटेशन से करेंगे. बहुत ज्यादा
not in the, in the definition of God and prayer as such, but अपने आप को जानना. तो वो जो हम अपने आप को जानने की desire कि who am I, what is my life's purpose, मैं यहाँ आया ही किस लिए हूँ, तो वो जब questions arise होते हैं, then you have entered the second mansion. The devil continues to try to make us believe that material things and relationships are of an eternal nature and all importance. अभी हम एक उसमें फंसे रहते हैं कि our family is important, our work is important, money is important, कि हम मेडिटेशन में टाइम ज्यादा लगाएं, कि हम भगवत गीता पढ़ें, कि हम पतंजलि पढ़ें, कि अब हम एक बहुत स्वैंकी कार खरीद लें, कि हम ज्वेलरी खरीद लें, कि हम सर्विस में जाएं, कि हम डोनेशंस करें. अब एक कंफ्यूजन है. हम कभी इधर हो जाते हैं, कभी हम इधर हो जाते हैं. We are still swinging, most of us. Here we must keep foremost in mind that all earthly things come to an end, while God's love is eternal. तो जो हायर कॉन्शियसनेस है वही इटर्नल है. ये बॉडी तो हमारी एक टेम्पररी चीज है. तो जब हमें ये समझ में आने लगेगा कि डेथ इज नॉट द एंड, आवर सोल इज गोइंग टू गो ऑन, एंड वी कम टू रियलाइज दैट लाइफ आउटसाइड द कैसल ऑफ द सोल नेवर गिव्स अस फुल सिक्योरिटी और द पीस दैट वी डिजायर. तो जो पीस, कंपैशन, हमने परसों मेडिटेशन करी थी, जो डेथ मेडिटेशन, उसमें जब बॉडी जल जाती है, इट्स दैट टाइम द सोल अंडरस्टैंड्स कि मुझे एक्चुअल पीस तो अब मिला. Now I can see my real self. I was covered with all this, right? So when we start to know the reality of our soul, the soul starts to get more in charge of itself and seeks out the things of God to keep it on the spiritual path. And then we come to the third mansion now. Being good or religious, ये सारी qualities आने लगते हैं. जैसे हमारे चक्रास में हम qualities करते हैं ना, कि symbols, symptoms, कि इस चक्रा में है तो आपके कैसे symptoms हैं, है ना? तो कैसे होता है third mansion में? Being good or religious, these rarefied heights are a dangerous place for the seeker of God, at a risk of evaporating through hubris and forgetting to fear God. जब spiritual ego आने लगती है, the more we have received of him, the more deeply do we remain in his debt. We may experience periods of aridity when we do not feel the rush of love or faith, but we must plow through them and not be restless. At this stage of the interior castle, we stand out on a threshold full of surrender to the divine, or going back to relying on our own reason. तो ये हम mid point में आ गए कि हमें आगे जाना है, कि हमें worldly चीजों में ही रहना है. Now, fourth mansion, this is the first mystical level of the castle, where we are depending less on ourselves and relying on God. जब हमें trust and faith आ जाता है on the divine. So that is the fourth mansion. Not to think much, but to love much. Lovely line. Not to think much, but to love much. तो मतलब बिल्कुल सोचे बिना हमें compassionate और surrender की feel में आना है. This is the long-awaited take-off point in our awakening, where striving gives way to grace. टेक ऑफ पॉइंट मतलब अब हमारा जो एरोप्लेन है वो ड्राइवे में घूम घूम के रनवे पे रुक गया एक जगह. इट्स अबाउट टू टेक ऑफ नाउ. या तो वो टेक ऑफ करेगा या वो नहीं टेक ऑफ करेगा. सो इफ वी एंटर द फिफ्थ मैंशन, within these walls unity with God is achieved. We can pray all we like, but spiritual union is a mystery. अभी भी हम बिल्कुल फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं. We haven't reached the third eye. The soul is like the silkworm that feeds on the sustenance of God, and when we are in a state of full trust, we are cocooned in divine love. Only from this parcel of deity can we emerge as a butterfly, imbued with a lightness never before possessed. Teresa writes, it sets no store by the things it did when it was a worm. That is by its gradual weaving of the cocoon. It has wings now. How can it be content to crawl along slowly when it is able to fly? अब हमें अपने बारे में पता लगने लग गया है कि हमारा लाइफ का पर्पस क्या है. थोड़े थोड़े ग्लिम्पसेस आते हैं. तो अब हमें अर्थली चीजों में उतनी कंटेंटमेंट नहीं मिलेगी. हमें लगेगा वी आर वेस्टिंग टाइम. व्हाट आर वी डूइंग? हमें उतना ही कमाना है जितने हमें जरूरत है. छोटा घर, अब बड़ा घर, अब बड़ा घर, अब मुझे मैंशन चाहिए, अब मेरे को विला चाहिए, अब मुझे फार्म हाउस चाहिए. उससे थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग आने लगेगी. Now, sixth mansion, the soul is now engaged to the spouse, but God seeks to test it a little more before marriage. The soul is awarded even greater favors, but also greater trials.
This is the time when we are most vulnerable to a dark night of the soul. जो वो लूडो में 99 पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, वहां पे अगर स्नेक काट जाए, अब बिल्कुल नीचे आते हैं, आई थिंक 5 या 7 तक या 3 तक, आई डोंट रिमेम्बर दैट, बट बिल्कुल नीचे आ जाते हैं जब अगर आपके अंदर बहुत एरोगेंस आ जाएगी कि ओ मुझे तो बहुत कुछ पता चल गया, आई तो रियली नो, अब ये सब तो मैं बिल्कुल बाकी लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, आई ओनली नो एवरीथिंग. सो दैट ईगो जैसे आने लगती है, दैट इज द ट्रायल पॉइंट. तो गॉड भी हमारी ट्रायल लेते हैं. बट इफ यू हैव सरपास दैट, अगर आपने वो भी पास कर दिया, देन यू रीच द 7th mansion, फाइनली betrothal to God, engaged to God with perfect peace and tranquility. As the soul dies to itself, a person becomes a perfect expression of God on earth, a saint. Though events and trials still happen, they occur as if around the person, not really affecting them. तो उनको कोई इफेक्ट नहीं, वो युधिष्ठिर बन जाता है, वो युद्ध में भी स्थिर हो जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता what is happening outside. So he is actually married to God now. या वो समाधि स्थिति में आ गया है. So the soul's journey was divided into 2 stages. First 3, 4th transient point, बीच का point, और उसके बाद में उसको वो आगे चला जाता है. Yet only through prayer and meditation, she wants, can we begin to progress. So everything comes back to square one. हमें करना क्या है? Here prayer means love, affection, compassion, and meditation. So these are the only ways by which you can be आप अपने डिवाइन को टच कर सकते हैं. Going to church, saying prayers, reading holy works, forgiving people, all seems old-fashioned now. The simple worship and contemplation keeps us on the straight and narrow, providing a clear path through the thickest of our mind. तो हमें actually practically compassion को हमें follow करना है. सिर्फ endless prayers कर लेने से कुछ नहीं होगा. हमें उसको practical करना है. Throughout interior castle, Teresa states her ignorance before learned men and describes herself as a bird with broken wings. There is a time for penance, she is reputed to have said, and a time for partridge. मतलब partridge here means party time. वो लोग Christmas, partridge is a bird. Christians non-vegetarian नहीं होते, तो इसलिए ये use हुआ है कि party करने का अलग time होता है, enjoy करने का, और penance करने का अलग time है. Okay. She calls herself Bride of Christ. Indeed, there is a famous Bernini sculpture of Teresa in one of her, this I've already shown you that, okay. So I can stop the sharing of the PDF. My presentation still goes on. Any questions now? We can continue. We can take the questions at the end. You can continue, ma'am. Anji, ठीक है. You can see my slides now again? Yes. Okay. Just a few more left. I think the castle was quite simple. समझ में आ गया सबको? Sure. Yeah, we have done her prayers. I've done the mansions. Prayer water से उन्होंने कैसे irrigation से उसको करा है. These are some beautiful quotations of hers. My head sounds just as if it were full of brimming river, and then as if all the water in those rivers came suddenly rushing downwards, and a host of little birds seemed to be whistling, not in the ears, but in the upper part of the head, where the highest part of the soul is said to be. So she talks about the crown chakra. जब वो इतना ज़्यादा उनके अंदर God के साथ unity हो जाती है, she feels absolutely divine and enlightened. Now this is a very famous and a beautiful prayer of St. Teresa. Let nothing disturb you. I've already explained this before. एक slide में ली थी. Nothing frighten you. All things are passing. God never changes. So God permanent है, divine permanent है, हमारी soul permanent है, हमारी higher consciousness permanent है. What is temporary? Our body. Yes, ये pass हो जाएगी. Patience obtains all things. Nothing is wanting to him who possesses God. Nothing is wanting मतलब उसको और किसी चीज की desire नहीं है, और कोई want नहीं बचती है, जो higher consciousness के साथ को समझ लेता है. God alone suffices means वो ही काफी है, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है.
Okay, now these are just other books which we have done also, and a couple of them which we are going to do also, जिनकी almost similar teachings हैं, similar हमने stories पढ़ी हैं. St. Francis of LCC मैंने ही करा था. I think इसमें I will not spend too much time here. इनकी भी prayer हमने करी थी. अगर आप सबको याद हो, हम सबने बहुत अच्छे से गाई थी ये. Lord, make me an instrument of your peace. याद है? Remember? Absolutely, we Yes, remember. ma'am. Yes. Yeah. So उनका भी वही था. He also made his own order. वो अपना group उन्होंने बनाया था जिसमें ये dress सबकी यूनिफॉर्म बनी थी, सिंपल ड्रेस्ड. ये भी सिंप्लिसिटी की तरफ गए थे, राइट. ये भी पहले शुरू में बहुत इनको भी म्यूजिक वगैरह और ऐसे वो सब पसंद आता था, बट देन ट्रांसफॉर्मेशन आया और वो भी कंपैशन फॉर एनिमल्स, फॉर प्लांट्स, फॉर नेचर उनके अंदर बहुत आ गया था. और उनका ये जो ड्रेस है काफी टाइम तक, मतलब अभी तक यही जो उनके ग्रुप के लोग हैं वो यही पहनते हैं अभी भी. इफ यू हैव सीन दैट मूवी, अभी कौन सी सर ने बताई थी, कौन सी देखी थी मूवी हमने, जिसमें वो बॉय होता है हु इज ऑन द जिमनास्ट जो होता है, कम ऑन समबडी टेल मी. Dan Millman. या राइट. तो वो उनको भी एक विजन के अंदर ही सीज peaceful warrior, right? Yeah. Oh, was this a peaceful warrior? No, it was somewhere else. I'm forgetting. I'll tell you some other time. Or it was Celestine. Yes, Celestine prophecy. Vision aati hai. Right. Thank you, Rohan. Yeah. It was in Celestine prophecy. Okay, this is another one. Saint Augustine. इनका भी ऑलमोस्ट ये इनकी हैंडराइटिंग में है. ओरिजिनल इनके जो स्क्रिप्ट्स हैं जो बाद में फिर इंग्लिश में बनाए गए थे. तो ये भी पीस एंड ऑर्डर. वो कहते हैं ट्रबल माइंड को फेथ जो है, जो रिलीजन है, वो फेथ ला सकता है ओनली बाय सिंप्लिसिटी एंड बीइंग इन. जो ट्रबल्ड माइंड है हमारा, मतलब हम जैसे जो बहुत अपसेट रहते हैं, तो रिलीजन का फेथ, मतलब यहाँ पे रिलीजन मीन्स लव फॉर द हायर कॉन्शियसनेस, लव फॉर द लॉर्ड, राइट. तो वो बोलते हैं इफ योर मिजरी इज ग्रेट इनफ, देयर इज चांस दैट यू विल aim at an equally greater sense of peace and purpose. तो वही बात आ जाती है कि हमारी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स होंगी उतना हम इजीली हम कनेक्ट हो पाते हैं with our higher consciousness. Okay, all right, I'll go ahead. इनकी लाइफ में भी काफी स्कैंडल्स और अप्स एंड डाउन्स रहे हैं. इनफैक्ट he lived with a girl out of wedlock. They had a child also, but in their beginning lives इनकी लाइफ में भी काफी, ये तो बहुत ही पुरानी बुक है, 400 AD की है. तो इनके भी विजन्स होते थे, इनको भी विजन्स आते थे बहुत ज्यादा से. तो दे हैव सिमिलर स्टोरीज. ओके, विजन्स एंड देन लिटिल outrageous lifestyles and then coming to simplicity and divinity. This was another one, Kemp, the book of Marguerite Kemp. Now she was married. In fact, she had 14 children. But ये भी बहुत ज़्यादा डिवाइन की तरफ इनका रहता था. बहुत मिस्टिक थी इनकी लाइफ भी. तो इनको भी चाइल्डहुड में फैंसी क्लोथ्स एंड इंटरेस्ट इन मैन वगैरह काफी था. बट देन उनको धीरे धीरे समझ में आया कि पैसा इज नॉट एवरीथिंग. यू नो, ऑल दीज आउटवर्डली थिंग्स आर नॉट, these are basically work of the devil. So actual में हमें compassion में रहना है. And then इनको भी बहुत visions आते थे and ये conversation करती थी with Jesus. And then इनके अंदर भी transformation through religion ही आया था. So she also used to hear inner voices, और वो inner voices के through she started writing. Mother Teresa also we had discussed जब हमने Francis of LCC किया था. Mother Teresa also, her life was totally in compassion and love for everybody. Okay. People are unreasonable, illogical, and self-centered. Love them anyway. Honesty and frankness makes you vulnerable. Be honest and frank anyway. What you spend years building may be destroyed overnight. Build anyway. Give the world the best you have, and you will get the kick in the teeth. चाहे आप सबके साथ बहुत अच्छा करो और वो तुम्हें फिर भी वापस मुड़ के लगाएंगे. You know, even if they do not give you back
the same love and affection, still give the world the best you've got anyway. So these are the teachings of Mother Teresa. Okay, this is one last book which has been given here, which is almost similar, or on. This is much later. This book, ये तो काफी new book है. इसमें भी Gary Zukav. I think we've done this here. Seat of the Soul. No, we've discussed No. it. It is to be done. Okay. Sir has talked about this book many times. All right, because the preface was given by Oprah Winfrey, and I've always been a great fan of Oprah Winfrey. So she writes, the seat of the soul changed the way I see myself. It changed the way I view the world. So ये भी बहुत inspired रहे हैं by the life of Carl Jung, Einstein, etc. तो उन्होंने कहा कि जब तक हम अपनी ईगो को कट नहीं करेंगे ना, we will never be able to receive any wisdom. तो हमें अपनी small I से तो ऊपर जाना ही है. Unless we do not rise above the small I, we will never be able to get connected with that bigger I. So this is what he says in this book. He says we have to go ahead from the duality. Duality से oneness में कैसे जाना है. All these things sound so familiar. We have heard it a number of times in the Bhagavad Gita, in the Patanjali, and now we feel that we are हमारी ना first mention से थोड़ी सी shaky state से थोड़ा सा हम stable हुए हैं, and we are able to understand these things. He says we have to trust our intuition. Okay, हमें अपनी intuition को follow करना है and trust the divine. ठीक है, तो this is what he talks about, कि हमें अपने duality से ये सारे good bad इन सब से beyond soul को देखना है, and then only we will be able to be in full balance of our life. So these are some of his quotations. Eventually you will come to understand that love heals everything and love is all there is. Another nice quotation of his is, for every action there's an equal and opposite reaction. You receive from the world what you give to the world. So basically, focused on love, compassion, the loving parts of your personality have no trouble loving. That is all they do. You experience the loving part of gratitude, appreciation, caring, patience, and contentment and awe of life. So I think with that, I end my presentation, and questions first, then we'll go for this. This is the final tribute to St. Teresa. Shall I discuss some questions or ye pehle prayer kar le? If anybody has any questions, you can ask, or otherwise we can just close our eyes and go for this prayer. This was her beautiful prayer. And today is a right day for the prayer. I don't see anybody's hand raised. You can continue, Jasbir ji. All right. Let us all close our eyes and hear the words of this prayer. They will go deep into your heart. बहुत simple prayer है, लेकिन बहुत ही deep है. So I request all of you to just close your eyes and hear this prayer with your heart. Let nothing trouble you, let nothing frighten you, everything passes away. Let nothing trouble you, let nothing frighten you, everything passes. God never changes, patience obtains all. Whoever has God wants for nothing. Whoever has God has enough. Whoever has God has all they need to live their life for God alone.
Could you hear the prayer? Yes, we could hear Yes, the prayer. yes. Okay. I was a little apprehensive whether I shared the sound or not. So I think it was an extremely beautiful prayer. What say? Yes, absolutely. Okay, with that, I come to the end of my presentation on this beautiful book today. Jasbir ji, we've got 10 minutes. Could you lead us into meditation? We've got 10 minutes. In case So we let have- us all connect with Christ consciousness and let us all enter into meditation. Okay. All right. Okay. If no questions, we can just go ahead with meditation now for the last 10 minutes. All right. Okay, pehle thoda sa we will just relax a bit. Close your eyes and just try to absorb whatever you have heard today. Three words you have to remember: compassion, humility, and detachment, or more rightly, non-attachment. Today's meditation, we are going to contemplate on these three words, which we have learned from the life of Saint Teresa of Avila. Let us calm our mind and our body by bringing our awareness to our breath. Because when we concentrate on our breath, we reduce the thoughts in our mind. And we start feeling from our heart. Just breathe in and breathe out. We are just going to be with ourselves and the learning we have learned from the life of Saint Teresa. अपनी लाइफ में कंपैशन बढ़ाने के लिए we will have to learn to breathe from our heart. So imagine you're taking a long breath in to your heart region and breathing out from your heart. Continue breathing in and out from your heart region. As your thoughts start decreasing, a lot of energy and love is entering through your crown chakra and bathing your heart region.
Your meditation is cradling on your breath as if you're on a swing. As you breathe in, your awareness goes in. And as you breathe out, your awareness is going out. Just totally surrender to the divine.
The kingdom I was seeking outside was within me. जिसको मैं बाहर ढूंढता रहा अब तक. That was right here in the center of my heart, trying to teach me loving action, loving speech, loving thoughts. I was always looking for faults in others. But I forgot to go within myself. Today, from this beautiful nun, St.Teresa of Avila, once again, I've learned the lessons of compassion, of humility, and non-attachment. With this knowledge, I will go forth to practice them also. I don't have to have any fears if I learn humility. I can go and fight with hell. There is no one to fear. Now that I know the divine powers were all within me all this while. The world I was looking at is a dream, and only what is eternal is what I was not looking at. May I now hold on to what is eternal and not what is temporary. Last 10 seconds, my dear friends. Then, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and 0. Rub your palms, and with our hearts full of love, on this divine evening, let us spread all the love we have inside us. You can open your eyes now, my dear friends. And come back to consciousness. Thank you so much, Jasbir ma'am. It was a beautiful meditation, a beautiful session, beautifully presented. Thank you so You've much. done full justice to it. Thank you so much. Thank you. Thank you.
Thank you all my friends who have given me lovely comments. Yeah, Poonam ma'am, lots of them. Yeah. Sheetal ma'am, Abha ma'am, Rohan, Anita. Will stop the YouTube live? Yeah. I'm done now. Thank you. Yeah. So friends, tomorrow we'll be doing another saint, another nun, Mother Teresa. So do join in tomorrow, and Anita ji will be presenting the session tomorrow. And आज जैसे क्रिसमस ईव है. Wow, we look so nice, pink. Yes. तो हम सब क्रिसमस cheer spread करें, joy spread करें, Christmas spirit में रहें. Not today, but always. So let us all bring joy to the world, and let us all spread Christmas cheer. Absolutely, yeah. Yeah. Wonderful. So किसी को कुछ और, अब तो YouTube बंद हो गया. Now we can. Live चालू है, आप बंद कर सकते हैं. Live Oh is my still God, on. live is You are the still- host. You have to switch it off. Just I'm the host. Okay. Yeah. I'll just switch it off. Just a second. Yeah. Please.